We now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. Ek second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of Section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol to... I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 hoga. 10 of my talking. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. Line 5 पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause, i.e. subsection 5 of Section 215. Envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR, Calcutta, Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of Section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आगे केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, refer to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Ji. Last 5 lines. The government of the political party
so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you, एक second. Will you agree with this? Ji. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government or the political party so formed must implement the program of the political party. ये manifesto की बात. नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे हैं कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. It's like a wish. God cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए. For instance, आपके मैनिफेस्टो में लिख दें, God can't direct you. Parliament can change laws if they want to. Correct. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर. सो आई वुड सपोर्ट दिस जजमेंट. एंड आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड इन 10 only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. जी. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. बाकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. चलें जी. अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. जस्ट द कॉन्सेप्ट, एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट. उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की. सो ही वाज गोइंग टू बी अवे. तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल. तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन. So one of the grounds taken was कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया is not the advocate general, he is somebody else. तो कोर्ट ने कहा कि show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. तो अगर वो prejudice नहीं है तो there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड. Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ें कैसे? जी, वो ये कहते हैं. उनका तो और भी बुनियादी. लेकिन मेरा अभी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या. Correct. क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते. That point is conceded. But nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ. और ये judgments हैं, कुछ judgments मैं quote करना चाहूँगा your lordship में say points different things. किस point पे? इसी point पे कि there's a concept of de facto, something happening de facto, कि appointments गलत भी हों तो जो orders pass हो गए हों या actions हो गए हों वो nullify नहीं होते. ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना जी. हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूँगी इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाएं और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है. जी जी, अली वो वाला दो ज्यादा जजेस के वो जी.
जी वो फरजंद केस, फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, अब वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है। तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल? वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस। तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना, आई हैव नो इशू। अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू। ठीक, चलें। अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम चल बेसिकली चिलिंग। खत्म आई एम खत्म जी। I hope you're not खत्म। अच्छा वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाएं उनको। तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is, whatever Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप। ठीक है? और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से, and if you still have any complaint, you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? तो this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. Too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, क्यों? और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. No, मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. कौन सा थाना है? कोसार आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection, ठीक है? Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी यूर ऑनर। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए, गौर साहब को अपने साथ, ठीक है लॉर्डशिप। इन द सेंस कि उनसे इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, जी सर। आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए, एंड इफ गौर साहब इज नॉट सेटिस्फाइड देन Hamid Khan साहब, you can convey the thing or he can directly, so it would be better अगर आप कर लें, ठीक है? तो ठीक लॉर्डशिप। anything else गौर साहब? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, प्लीज go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. लॉर्डशिप। Thank you very much for coming into this. No. Actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for. I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. So, I mean, no point telling the AG he won't know anything. जी. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. मखदूम अली खान, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ, you only represent one. नंबर के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं,
अच्छा सॉरी आप अच्छा यू वांटेड टू ऐड समथिंग जी short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to two questions that have arisen here during the course of hearing. One was खान साहब थोड़ा सा इंतजार करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नहीं, वो अगर गौर साहब इज नॉट सेटिस्फाइड वी विल टेक फर्दर एक्शन, डोंट इस वरी. केस को कुछ वी हैव नॉट टेकन एनी, मतलब लेट्स चलिए अब केस पे बात करें. जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं. केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया जाता. The two places खान इस्लामाबाद. साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर, बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने. उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुंचाऊं. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. नहीं, मगर खान साहब आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं तो अगर आपकी बात ये बात है तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो. फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. इसलिए कि अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना. अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाकर अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहां सिक्योरिटी देते हैं. कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं. नहीं, मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे. जी 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 चलिए. We still have a duty to चलिए let's proceed with the notice case. to them. Secondly, We can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. जी. Why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी जी. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना. अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की. तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में. सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है. किसी को आने की जरूरत नहीं है. जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स ले आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है. मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनके डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. मगर ये देखिए बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर विच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते. फिर दूसरी बात है, मगर वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं. मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया है. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था. लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था. ये हम सब गुजरे स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी. देखिए we have all played this game. पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इम्पोर्ट हो रही है
कराची से नहीं बिकॉज ये FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम चलिए, ठीक है, आगे चाहता। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, नाउ सर आई एम कमिंग टू द propositions, few propositions in addition to what has been very ably comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind always. Ji. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP, being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on two recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the higher court. Yes. And he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and separate jurisdiction is under Article 199. So though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये is, बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी, कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. yes, another party aggrieved can come home. ECB can't come. जी, अजीब सी बात नहीं होगी? या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना, कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. Javed Hashmi का केस तो 5 These are member very recent judgments. हाँ?
One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ। जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का वो। जी सर। हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना कर ली। चाहें? वो तो अच्छा। आपने पहले दिन बता दिया था। एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1, there is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है। वही 2 जज। हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं। एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था। इलेक्शन पिटीशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास, जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकती। ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू। एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। उसकी कॉपी आपको दे दी। दे दीजिए। A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी फुल मेंबर है। आप दे रहे हैं कॉपी? जी, इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है। महसूस आपके इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार। अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये right of information वाला है। अहमद अली वाला केस। हाँ, तो हमने दे दी अब इंफॉर्मेशन। नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर। दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट। May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता। Another 5 minutes I'll provide. हाँ, पढ़ लें। जी सर, पढ़ देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these 2 cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment, they cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue but you can't defend. ये क्या बात हुई?
No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही। institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in अगर dispute. कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया। तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस। देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे। सर देखिए, वो आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, you can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का जी। बिफोर द 18th amendment, before the 18th amendment, Let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको बिकॉज उसके एंड पर बात करूंगा मैं, इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि आर्टिकल 17 में एक शिक थी, आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के। Every subject to law hold intra-party election to elect office bearers and party leaders. Now this was omitted under the 18th But amendment. it was brought back by 207 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2000. So therefore, while interpreting the election act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because constitution does not off the statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or by commission, they are